Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening and welcome to the Thursday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Sparsh Saxena. धन्यवाद। नमस्कार। घड़ी का इशारा हो चुका है शाम 6:30 का और हम आप सभी श्रोताओं का आपके फेवरेट शो मार्केट मंत्र में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज के इस अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार की हलचल पर एक नजर डालेंगे और साथ ही चर्चा भी करेंगे। चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक विश्लेषक कुमार बिजॉय। कुमार जी, मार्केट मंत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत। A warm welcome. धन्यवाद, थैंक यू। सबसे पहले अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ हैं राजेश लेक। Domestic benchmark indices end with losses. Sensex dips over 420 points. Nifty closes at 23,350. India and Guyana signed 10 agreements to enhance cooperation in various sectors. Prime Minister Narendra Modi puts forward 7-pillar proposal to further strengthen India-CARICOM partnership. And India and its businesses have become integral part of global value chain, says Union Minister Piyush Goyal. घरेलू बेंचमार्क सूचकांक आज गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स में 400 से अधिक अंकों की गिरावट और निफ्टी 23,350 पर बंद हुआ। भारत और गयाना के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 10 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत कैरिकॉम साझेदारी को और मजबूत करने के लिए 7 स्तंभ का प्रस्ताव रखा और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत और भारतीय व्यवसाय तेजी से वैश्विक मूल्य श्रृंखला का हिस्सा बन रहे हैं। Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज के बाजार के हाल के ऊपर। घरेलू शेयर बाजार आज कमजोर वैश्विक संकेत, विदेशी निवेशकों द्वारा निकासी और कई शेयरों में बिकवाली के चलते गिरावट के साथ बंद हुए। कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 422 अंक की कमजोरी के साथ 77,156 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 169 अंक के नुकसान के साथ 23,350 पर रहा। बात करें बीएससी के मिड कैप और स्मॉल कैप की तो दोनों ही सूचकांकों में आज कमजोरी दिखाई दी। मिड कैप 0.37% गिरा और स्मॉल कैप 0.5% से अधिक के नुकसान में रहा। सेंसेक्स की 30 कंपनियों में से 20 में आज गिरावट देखी गई। Domestic benchmark equity indices today ended with losses amid sell-off in specific stocks, persistent foreign fund outflows and weak global cues. The 30-share BSE Sensex dipped 422 points or 0.54% to close at 77,156, while the NSE Nifty 50 fell 169 points or 0.72% to settle at 23,350. The broader market at the Bombay Stock Exchange also ended in negative territory. The mid-cap index slipped 0.37% and the small-cap index dropped over 0.5%. In the Sensex index, 20 out of 30 companies logged losses. In the top laggards, Adani Ports tumbled over 13.5%, NTPC shed over 2.7%, and SBI Bank fell over 2.6%. Conversely, among the top gainers, Power Grid increased over 3.4%, Ultratech Cement rose 1.4%, and HCL Tech gained over 0.8%. In sectoral indices of the BSE, 15 out of 20 sectors ended with losses. In the top laggards, services declined over 4%, utilities dropped over 3.1%, and commodities shed over 1.5%.
Meanwhile, among the top gainers, realty advanced over 1%, focused IT gained nearly 0.5%, and information technology added over 0.3%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 1,237 companies advanced and 2,736 declined, while 92 remained unchanged. At the National Stock Exchange, 37 companies hit their 52-week high, while 160 hit their 52-week low. विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 8 पैसे गिरकर 84 रुपये 49 पैसे के स्तर पर दर्ज किया गया। डॉलर इंडेक्स अंतर्दिवसीय कारोबार के दौरान 106.69 के स्तर पर था। कुमार जी, लगभग बाजार जो है बढ़ता है लेकिन फिर वापस आकर के वही धीमी रफ्तार में हो जाता है। क्या क्या मुख्य कारण आप देख रहे हैं जो बाजार टिक नहीं रहा है? बाजार अभी अपने रेंज में है और जो सबसे मुख्य कारण बाजार का है वो अभी थोड़ा बाजार इंडिया में ओवर वैल्यूड है जी। और ओवर वैल्यूड होने के कारण क्या होता है कि इसमें करेक्शन जो वारंटेड करेक्शन है वो करेक्शन होना ही है। कभी जब कुछ बाहर के कुछ स्टिमुलस और कहीं भी कोई न्यूज़ ट्रिगर अगर होता है तो वो करेक्शन थोड़ा डीप हो जाता है, शॉर्टर पीरियड में ज़्यादा होता है इम्पैक्ट उसका। तो जैसे अगर चाइनीज़ मार्केट की बात करें तो चाइनीज़ मार्केट के जो स्टिमुलस पैकेज पे हर दिन कुछ नई बातें आते रह रही हैं जी। और जिस तरीके से चाइना जो है वो वेट एंड वॉच में अब कि यूएस की अपनी पॉलिसी कैसे होगी उसके अकॉर्डिंगली वो अपने स्टिमुलस को डिफाइन करेगा। लेकिन जैसे भी करेगा वो 2025 में ये पक्की सी बात है कि चाइना जो है वो अपने इकोनॉमी को एक बड़े पैकेज के साथ और मजबूत करने की तरफ जाएगा। तो उसका जो विड्रॉल का जो आप देख रहे हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर जो विड्रॉ कर रहे हैं, मुख्य कारण ये है। फंडामेंटली इंडिया में कोई कमी नहीं है जी। तो इंडिया में मजबूती है लेकिन ओवर वैल्यूड होने के कारण करेक्शन है। और कहीं कोई न्यूज़ ट्रिगर, जैसे आज यूएस का न्यूज़ ट्रिगर काफ़ी एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए रहा तो वो जबकि हेवी वेट बन चुका है वो अपने इंडेक्स में पूरे ग्रुप की बात करें तो उसका असर रहा। लेकिन जैसे ही क्लैरिफिकेशन आया तो आप देखें कि मार्केट फिर वापस एक रिकवरी में भी गया है। Bijoy ji, there are three things that I'm going to talk to you about and tell us how is that affecting the market. First and foremost is the global growth next year. That is weighing heavy on the markets, which in the global growth market, which in turn will depend on how the new president frames his policies. That one, how are we going to be affected by that? Two, what happens to India's growth? There is a lot of skepticism following the slowdown that we have witnessed all these days. India is going through a prolonged soft patch of growth. Third, that I would like you to comment is about the foreign portfolio investors. They are selling. What is the demand that is there for Indian equities? And the valuations which you touched upon a while back being one of the aspects relating to that. So how are these three things affecting the Indian market and the outlook of India? First question, which is related to global one, and especially when we talk about two the largest economy, America and China, that is what we're talking about. Now they are ready to have action and counter action for the coming year. We all are waiting how the second era of Trump, that is Trump.2, is going to work. How it is going to be, behaving. It's most of the expert has viewed that Trump will not be the way Trump 1 was there. They will be more aggressive, but on certain fronts, like related to Russia-Ukraine war or related to Israel and Hamas episode, Trump has got little middle path rather than those aggressive paths taking the side. Rather, Trump is expected to act as a neutralizer and making sure that cool calm is going to be there. Then only American vested interest, the kind of America's growth and making sure that now
inflation has started coming down there, but it should remain down. Growth should move up. That will be possible only when America will be able to participate actively into this. This is the first part of it. China, as I said, that China will be holding their stimulus also, waiting that how the new president is going to develop there. So it is a kind of a chess war between the two economy, and it is expected that more than $1 trillion of the stimulus is going to be there, which is anticipated somewhere 60% of the tariff may be imposed by the American government, coming American government, which should get neutralized through the domestic stimulus for increase in demand. This is what Second aspect, so far as India is concerned, India and Indian government is very much keeping watch on these things. And one very good part which you see, like we are also slowly taking our economic USP, that what we are good for and how we are going to have. Apart from so many things, our digital finance and especially the payment gateway, this is one product which we can say now we are ready to help so many countries. Not necessarily every time we require to, penetrate into mega economy. Even in a normal economy, emerging economy, developing economy, or even frontier economy, if we are entering into, I think that is going to give us a very good platform and good stability through those, financial integrations. I think that is we can believe in that Indian potential and power. So you think the FII's story is now changed? Whatever had to go has gone, and now they will be coming back? Exactly. I'm giving more weightage to overvaluation than this FI story, because domestic investors are really, rightly taking those positions, and had it not been that, an inherent strength should not have been there, this should have been a different figure altogether. Because I have a support point from currency angle also, which appropriately, I think when you will discuss currency, I'll talk about that. Okay. And so one very pertinent question and a big assumption for 2025 was the government spending. Yeah. So if things normalize, which is that the government will increase their government spending and they will go back to the budget capital expenditure target that they had set. Where do you think the market could be delighted? Could it be infrastructure, cement, or both? It is not only infrastructure and cement also, it's a software infrastructure also, like banking system is there. Even you'll find out health infrastructure is there. These are the certain dimensions you will find out that it is going to rewrite a new India story. So this is what we can look upon. It's a renewable energy, it's a banking infrastructure, it's a civic infrastructure, and it's all those health and education kind of things is going to be big way booster to Indian economy. कुमार जी, जैसा कि आज की जैसे खबर रही, या फिर अगर रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट देखें, या फिर और कौन कौन से ऐसे रिस्क आपको लगते हैं जो मार्केट को शायद थोड़ा सा और मे बी 5% और 10% जो भी रहेगा कि उतना और करेक्शन दे सकते हैं? क्योंकि निवेशकों में निरंतर ये चर्चा बनी हुई है, और अभी एक हम बहुत टर्म सुनते हैं, हर्ड मेंटालिटी, कि जब वो सेलिंग स्टार्ट होती है, और साथ में उससे जुड़ा सवाल यही है कि जब इस तरीके की अगर सिचुएशन दिखाई दे तो उस केस में आपकी क्या सलाह रहेगी हमारे श्रोताओं को, निवेशकों को, कि तब क्या स्ट्रैटेजी अपना के वो खरीदारी करें? देखिए, हर कोई जितने भी मार्केट को मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं, हर कोई एक वर्ड यूज कर रहे हैं, करेक्शन है जी, क्रैश नहीं है जी। और करेक्शन है, देखते हैं कि स्टेबल हो जाता है। अगर आप कल मार्केट देखे बंद था, उससे पहले मार्केट थोड़ा इंप्रूव किया, ये इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं कोई इनहेरेंट बहुत बड़ा स्ट्रांग सपोर्ट मिल रहा है मार्केट को, और वो सपोर्ट मिल रहा है। तो ये जो मार्केट इस तरह से अगर करेक्ट करता है अपने आप को, एक मूवमेंट के बाद करेक्शन और फिर मूवमेंट, वो सॉलिडिफिकेशन है मार्केट का। मार्केट बहुत अच्छे तरीके से जाता है। तो इन्वेस्टर को अभी थोड़ा सा धैर्य के साथ होल्डिंग स्ट्रेटजीज पे रहना चाहिए,
और ख़ास करके वो सेगमेंट, उस सेक्टर में अगर वो हैं निवेशित जहाँ के आगे फ्यूचर ब्राइट है, मूवमेंट होना ही होना है, आगे बढ़ना है, तो उसमें धैर्य खोने की जगह बल्कि अगर वो अपने कुछ और भी पोजीशन को फर्दर स्ट्रेंथन कर सके तो ज़्यादा अच्छा होगा। एवरेजिंग और एवरेजिंग जो करके, और उससे क्या होगा कि वो, हाँ, इंट्राडे वालों को थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है कि करेक्शन इज येट नॉट ओवर। जी, तो वो अभी थोड़ी सी So वॉलेटिलिटी अभी, what's your outlook for the coming days? sir, Volatility will volatility will be there because until unless, by the end, otherwise also, see, we are on 21st November, so we are going to have December effect also. Now December effect in a few last years have not been, but certainly we know that most of the foreign investors, they start otherwise also withdrawing and start booking their profit. So that I think till December and first part of January, they have to be little alert. जी, It is not normal. Bijoy, very, very briefly about the rupee depreciating 8 paisa to settle at 84 paisa, rupees and 49 paise. What's your take? See, basically, again here, I look little differently. It is not rupee which is depreciating, the dollar is appreciating. Because see, absolutely one can say, yes, sir, what is the meaning here? But when I say rupees dollar, I see rupees sterling also, rupees euro also, rupees yen as well. Had it been rupees depreciating, it should have been depreciating against most of the currency, which is not the story. So we simply indicate it is the dollar factor, not the rupee factor. So rupee is very much resisting against the appreciation of the dollar. Okay. Moving on, Prime Minister Narendra Modi will address the Parliament of Guyana at Georgetown this evening. The Prime Minister is on a 3-day tour to Guyana. Earlier, India and Guyana have signed 10 agreements to enhance cooperation in several areas including health, hydrocarbons, agriculture and allied sectors. The Memoranda of Understanding were signed on cooperation in the field of medical products, Jana Shuddhi scheme, cultural exchange program and deployment of UPI-like system in Guyana and cooperation. The agreements were signed between the two countries following the delegation-level talks between the Prime Minister and President of Guyana, Dr. Mohammad Irfan Ali, at Georgetown yesterday evening. Prime Minister Narendra Modi has said that India has stood with the CARICOM member countries and moved forward like a trustworthy partner. In his opening remarks at the second India-CARICOM summit in Georgetown, Guyana last night, Mr. Modi put forward a 7-pillar proposal, CARICOM, which stands for capacity building, agriculture and food security, renewable energy and climate change, innovation, technology and trade, cricket and culture, ocean economy and maritime security, and medicine and health care. The Prime Minister co-chaired the second India-CARICOM summit along with Prime Minister of Grenada, Dickon Mitchell, the current chair of CARICOM. Meanwhile, Prime Minister Narendra Modi met his Dominican counterpart Roosevelt Skerritt on the sidelines of the second India-CARICOM summit. The leaders explored opportunities for India-Dominica cooperation in areas such as climate resilience, healthcare, capacity building, and deepening of people-to-people ties. Mr. Modi also met President of Suriname, Chandrika Prasad Chan Santokhi. Both leaders reviewed progress on India-Suriname partnership and agreed to expand bilateral cooperation in various areas. In his meet with Prime Minister of Trinidad and Tobago, Dr. Keith Rowley, both leaders discussed ways to strengthen relations in areas of digital transformation, health, defense, and maritime security, transportation, and cultural exchanges. During the meeting of Mr. Modi and his counterpart from Bahamas, Philippe Brave Davis, the discussion focused on strengthening economic ties, climate change action and green partnership. The Prime Minister also held bilateral talks with his counterparts from Barbados, Mia Emor Motley, Prime Minister of Antigua and Barbuda, Gaston Brown, and his counterpart from St. Lucia,
Philippe J. Pierce. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत अब विश्व का विकास इंजन बन गया है। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की की 57वीं वार्षिक आम बैठक में श्री गोयल ने कहा कि भारत और भारतीय व्यवसाय तेजी से वैश्विक मूल्य श्रृंखला का हिस्सा बन रहे हैं। श्री गोयल ने इसका श्रेय सरकार की योजनाओं और निरंतर प्रयासों को दिया। उन्होंने उद्योगपतियों से नवाचार और अनुसंधान के इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए भी कहा। उन्होंने कहा कि फिक्की से नवाचार से जुड़ी कंपनियों का एक समूह बनाएं। श्री गोयल ने उद्योग जगत से व्यापार को आसान बनाने, शिकायतों का बोझ कम करने और अप्रचलित कानूनों को दूर करने में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने का आग्रह किया। Vijay, very briefly would like to have your comment on the India-Guyana and other West Indian nations that the Prime Minister is, not that he's not visiting, but he's interacting with the leaders there. How do you see this cooperation being leveraged by the countries? See, when we are talking about global outlook, especially the global south, we say, in that case, India is unstatedly is emerging as one of the prime leader, and that is the responsibility of India has taken on its own to take care of those economy, those countries who are actually lagging and who are not able to really participate. So the focus actually it has started from the period when COVID vaccines had been given as a vaccine metro scheme, followed by it has been something like a financial aspect which I was mentioning right now, that how financially we are going to help them. Apart from that, of course, various other trade and economic aspects are there, food and shelters are there. You look into one important point, wherever our Prime Minister is going, he is getting a best respect in the form of that award, in the form of that reward. Order of Excellence. Yeah, Order of Excellence. This is just a symbolic one. The time, especially during the COVID period, the way we have helped is really marvelous. This is giving us the lead aid. Moving on, the Employees Provident Fund Organization, EPFO, has registered a net addition of 18,81,000 members during September this year, representing a 9.33% growth compared to the same month last year. The Labour and Employment Ministry said that the surge in members can be attributed to growing employment opportunities, increased awareness of employee benefits and EPFO's effective outreach initiatives. और नजर डालते हैं अगली खबर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 25 तारीख को नई दिल्ली के भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता संगठन के वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सहकारिता मंत्रालय में सचिव डॉक्टर आशीष कुमार भूटानी ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पहली बार वैश्विक सहकारिता सम्मेलन और महासभा भारत में आयोजित की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 पर स्मारक डाक टिकट जारी करेंगे। 6 दिन के सम्मेलन की थीम है सहकारिता से सबके लिए समृद्धि। आईसीए के इतिहास में 130 साल के इतिहास में पहली बार भारत में कॉन्फ्रेंस हो रही है। ये दर्शाता है कि भारत जो सहकारिता सेक्टर में उसकी जो पकड़ है, पहुंच है और पोजीशन है काफी मजबूत है। जैसे मैंने और बताया कि 1/4 देश के दुनिया के कोऑपरेटिव 1/4 भारत 25% भारत में है और 8 लाख कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं देश में और हम कई तरह के उत्पाद पैदा करते हैं। फर्टिलाइजर है, शुगर में हमारी पकड़ अच्छी है, रूरल ट्रेड में अच्छी पकड़ है और टेक्सटाइल हैंडलूम में हमारी पकड़ अच्छी है। हमारी सहकारी समितियों की एक प्लेटफॉर्म मिलेगा सबको अपनी बात रखने का, लोगों से सीखने का, सुनने का और अपने व्यूज और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने का और दुनिया भर से। So, your comment, I was asking you about your comment about the cooperatives build prosperity for all. How is it going to benefit Made in India? See, basically, cooperative, initially, if you look into this very philosophy was there to go to those levels where normally through your normal institution, you are not able to reach it. But especially the summit which we are going to talk, which is going to be scheduled on the 25th, it is indicating India is not only looking in domestic market, India is looking global market and meaningfully, not only becoming a member, silent member or a member sitting on the back seat, it is engaging the entire thing and ready to host it. This is what we are expanding, make in India, but make for whole world. जी। That is what the philosophy is fulfilled.
आइए अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर। 5 प्रमुख एशियाई सूचकांकों में से 4 आज नुकसान के साथ बंद हुए। जापान का निकेई 0.8% गिरा। हांगकांग के हैंगसेंग में 0.5% से अधिक की कमजोरी देखी गई। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स 0.12% फसला और दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 0.07% की मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ। वहीं चीन के शंघाई कॉम्पोजिट में 0.07% की मामूली बढ़त दर्ज की गई। वहीं यूरोपीय शेयर बाजारों में आज मिला जुला रुख देखने को मिला। अंतिम समाचार मिलने तक लंदन का फुत्सी 0.4% के फायदे में था। जर्मनी का डैक्स 0.2% बढ़ा और फ्रांस का कैक 0.1% के नुकसान के साथ कारोबार कर रहा था। US stocks displayed mixed trend yesterday as escalating tensions between Russia and Ukraine kept investors on edge. Snapping a 4-session losing streak, the Dow Jones Industrial Average ended the session with an uptick of 0.3%. Meanwhile, the Nasdaq Composite lost over 0.1% and the S&P 500 ended flat. So in your Bijoy views, what is it that the Fed will be behaving? I think Fed will also be very, now cautious related to what way they should be having. Now inflation is under control, and it is expected that they should go for another rate cut. But it's right now complete set of clarity is not available in the market. That how keeping the geopolitical tensions that's happening in the world, oil is going to be pressurized, do you think? Not too much. The way it has been, because that factor has already been discounted, even if it is scaling up, whether it is Russia, Ukraine, or even Israel front. But the US stocks displayed mixed trend because of the war. That is true. But you look into the oil price range in the last few months, you'll find out it is very much range bound, and it is not on a higher side. Okay, let's give you the rates. Oil prices edged up today due to supply concerns amid escalating geopolitical tensions. Brent crude was trading 1.8% up at $74.13 per barrel, and the WTI crude gained over 1.9% to trade at $70.08 per barrel when reports last came in. सराफा बाजार में सोना आज बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक भारत में 24 कैरेट सोना 0.64% बढ़कर 76,820 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था। वहीं चांदी 0.3% बढ़कर 90,640 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज की गई। कुमार जी, सोने को लेकर के आपके क्या विचार हैं? क्योंकि सोने पे हमारे पास कई कॉलर्स के कॉल भी आते हैं कि वो किस तरीके से निवेश करें, क्या ETF में जाएं, क्या गोल्ड फंड्स जाएं, या फिर फिजिकल गोल्ड बेहतर ऑप्शन है? क्या आपका सजेशन? हाँ, यहाँ पर अगर मुझसे पूछेंगे आप तो मैं तो यही कहूँगा कि इसमें अच्छा खासा पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है जी। और जो अगर जितनी ज़रूरत आपको सोना की फिजिकल फॉर्म में है वो रखिए, उसके अलावा आप ETF पे जाइए। और अमूमन देखा गया है कि इस टेंस माहौल में सोना अधिकतर ऊपर हमें दिखाई देता है, या फिर जब मार्केट्स को देखते हैं कि मार्केट अगर नीचे है तो सोने के रेट्स ऊपर होते हैं, बट अभी फिलहाल दोनों ही चीज़ें नीचे चल रही हैं। ऐसा क्या कारण है? इसका देखिए, सोना तो अभी आने वाले टाइम में थोड़ा और बढ़ेगा, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ मार्केट रीजन। ये इवन हमारे कंट्री में जो अब मैरिज सीजन है, मैरिज सीजन के कारण भी सोना काफी ऊपर जाएगा। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जो गोल्ड है वो ऑलवेज एक अपोजिट हेज रखता है अपार्ट फ्रॉम मार्केट, तो वो भी गोल्ड उस तरह से बिहेव कर रहा है जी। और श्रोताओं, वक्त है कार्यक्रम को यहीं अंत करने का। कुमार जी, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you for being with us, Bijoy. And before we close, the headlines once again. Domestic benchmark indices end with losses. Sensex dips over 420 points. Nifty closes at 23,350. India and Guyana signed 10 agreements to enhance cooperation in various sectors. Prime Minister Narendra Modi puts forward 7-pillar proposal to further strengthen India-CARICOM partnership. And India and its businesses have become integral part of global value chain, says the Union Minister Piyush Goyal. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra.